ऑनलाइन चिल्लर कोई होता है यहाँ पे? हाँ जरा ऑनलाइन चिल्लर ना। Are you able to see the PPT? No, sir. Yes, sir. बता। Okay, so now I'm able to see it. Okay. मनस्वी निकम। देवस्मिता। Fine. What I want you is इनका brothers publication है। I just want you to open that part ताकि आपके बुक में कुछ अलग है तो बता देता हूँ सिंपली। अभी फर्स्ट पेज पे एवरीथिंग इज सेम जो अपन ने कवर कर दिया था एक्सेप्ट वो लियोनार्डो विंसी स्टार्टिंग का पढ़ो खुद पढ़ते हो। सेकंड पेज दैट गिवन यू शेप एंड साइज ऑलरेडी वी डिस्क्राइब शेप साइज तो सब कुछ कर दिया था। इट इज एग्जैक्टली सेम जो संज्ञा में भी है। देन थर्ड इज दैट गिवन यू इन टर्म्स ऑफ योर सेल स्ट्रक्चर। सेल वॉल हमने कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन हमने कर दिया था। साइटोप्लाज्म वी डिड दैट इज साइटोप्लाज्म अलोंग विद दैट प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो होता है इज कंपोज्ड ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनेल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच इंक्लूड वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स। देन नेक्स्ट पेज पे दिया है ऑर्गेनेल्स इंक्लूजन्स। अब इंक्लूजन में दिया है वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स जो हम लास्ट में करने वाले। सो विल डू दैट बट इन द लास्ट। On the right hand side corner top that given you about protoplasm के transparent semi part large component what is उसके composition के बारे में क्या which is again a complex form. Then the protoplasm that occurs in the nucleus is also called as nucleoplasm. Then they given you is next page again structure inside an animal cell diagram दिया हुआ है and then the chapter starts from the next heading in your book cell organelles. जहाँ पे पहला दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड दिया है राइबोसोम्स, थर्ड दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ पेरोक्सिसोम्स विद गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स। आई थिंक अपन ने आर यू एबल टू सी द पीपीटी? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या दिख रहा है? Yes, sir. ओके सो अपन ने कंप्लीट कर दिया था। हाँ या ना? Yes, sir. We are done ER, we are done ribosomes, we are done mitochondria, and we also done the Golgi balls. अब आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाता हूँ मैं तो वहां पे पहला लिखा है ER, उसमें लिखा हुआ है दे अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें दो फंक्शन दिए, इट प्रोवाइड्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो फ्रेमवर्क तो इसमें भी लिखा था आपके ER में, फ्रेमवर्क वहां पे लिखा हुआ है। सेकंड फंक्शन इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सो ट्रांसपोर्टेशन दैट इज आल्सो गिवन। यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो यहाँ पे है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन बिकॉज़ नहीं नो मार्क्स आर गिवन इफ यू राइट ओनली वन वर्ड। अब तो एक हाँ ये दो पॉइंट लिख के मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं लिखा चलेगा ठीक, पर ये लिखा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके बुक में नहीं है तो मुझे पता नहीं। दैट इज आल्सो वैलिड। देन कम्स राइबोसोम्स। The ribonucleic acid are dense spherical and granule particles of the in the matrix or even attached to ER. Chemically, the major constituent of ribosomes are RNA. What is RNA? Ribonucleic acids, which is the genetic material in most of the viruses. हमारे में genetic material DNA होता है, DNA gets copied to form RNA and RNA then goes on to form the protein structure. That's how we work. Then fats and practically absent.
राइबोसोम्स प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का आपने देखा था एक ही फंक्शन होता है, wherever it is it has only one function, it is a factory for protein synthesis. Third comes mitochondria. What is mitochondria known as? Powerhouse of the cell. Now why powerhouse of the cell? तो आपकी बुक के हिसाब से the mitochondria tiny bodies are varying shape, then each is bounded by a double membrane envelope. Apart from nucleus, it is only mitochondria and chloroplast, which is a double membranous structure. चलो इसी करना है। Sir, okay. Then mitochondria, मतलब the inner membrane is cristae, तो अपन ने कहा था the enfolding is known as cristae, and then mitochondria sites of cellular respiration, they use molecular oxygen to from the air to oxidize. It breaks down the glucose to give me energy in the form of ATP. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, the carbohydrate fried from the cell to carbon dioxide and water vapor, oxidation release energy, hence the mitochondria is known as powerhouse of the cell. Animal cells are better ratio of mitochondria than plant cells. Why? Because animals like and us human beings have to do more work. Because animals can locomote, move. Plants do not move. Plants reproductive system is also slow, unlike us. So unme mitochondria could be less. Then in plant energy is also produced during photosynthesis. This compensates for the lack of mitochondria. Then तीसरा ऑर्गेनल दिया हुआ है जो मेरे स्लाइड शो में नहीं था, वो था पर ऑक्सीजोम्स, जिनका सलीना है उनमें ये नहीं है, पर जिनका है उसमें ये दिया हुआ है ना। व्हाट आर पर ऑक्सीजोम्स? अगर आप ये पहली बार एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको देना चाहिए था, पर दिया गया है। मोस्टली फाउंड इन किडनीज एंड द लीवर सेल्स। पर ऑक्सी, पेरिऑक्सीजोम्स मतलब क्या? जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आर माइक्रोबॉडी विच कंटेन पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स फॉर फोटो रेस्पिरेशन। इसमें होता है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स। ओके, देन हाइड्रोजन peroxide metabolism, animals and plants, and purine metabolism, purine यूरिक एसिड ग्योनाइन, ये सब ये एनिमल्स में होता है। इट हैज टू रिमूव ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। लीवर और किडनी से रिलेटेड है, वापस इट इज हेल्पिंग अस टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। Then comes Golgi complex, जो अपन ने उस दिन पढ़ा भी था शायद से, and we have done the Golgi complex also. So next comes is the lysosomes. अपन शायद ये कर रहे थे, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल करा। So now we need to understand what are lysosomes. So lysosomes are suicidal bags of our body. They are digestive enzymes which digest the unwanted or the things which are not required, damaged cells, damaged components, etc. अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोच समझ के सुनना। मैंने लास्ट टाइम कहा था क्या, सपोज सर्टन टू पीपल, इनको मैंने किडनैप कर दिया, okay? और किडनैप करने के बाद जोर से चिल्ला रहे हैं, क्या है, बहुत कुछ इरिटेट कर रहे हैं मुझको, उनको बोल रहा हूँ कि अगर ज्यादा दिमाग खा तो जो शूट कर दूंगा, but still you know रो रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, तो I literally get pissed off with the crying and shouting of you, तो I fire a bullet. Okay? अब बुलेट मैं जब फायर कर रहा हूं तो पहला बुलेट मैं इस पे फायर करता हूं, the bullet hits onto his hand, it is inside. Okay? बहुत खून निकल रहा है, तो चिल्ला रहा है दो से वगैरह वगैरह। अब ये भी चिल्ला रहा है उसके साथ, फिर मुझे ऑफिस गुस्सा आता है, and I shoot at him also. Okay? The bullet touch and go होता है, तो खून इसमें भी निकल रहा है। okay? आधे एक घंटे का मुझे रहम आ जाता है, अगर मर भी गए तो सो बेटर टेक देम टू हॉस्पिटल, डॉक्टर को मैं बुला लेता हूँ, okay? डॉक्टर के पास भेज देता हूँ, थोड़ा रहम दिल भेज दिया। अब डॉक्टर कोविड बैच की बात का डॉक्टर है, okay?
So doctor is our VIP back to side पीछे वाला. Okay, तुम्हारी नर्स के हाथ में. So it sees you और बोलता है ऑपरेट करना पड़ेगा, बुलेट निकालना पड़ेगा. ऑपरेशन थिएटर में लिया, बुलेट निकाला. Okay? After some time he comes and says, सर बहुत जहर फैल रहा है, मतलब पैंट खुला है, बच्चे का बहुत जहर फैल रहा है, अगर बचाना है तो उसका हाथ काटना पड़ेगा. बाद में इसको भी चेक करता है. Okay? उसको भी वही बोलता है बहुत जहर फैल गया और इसको काटना पड़ेगा. इज दिस राइट? नो. ये क्या बोलेगा, हाथ काटना चाहिए या नहीं चाहिए? ये नहीं बोलेगा ये। क्यों? ये क्यों आपका हाथ कटाएगा? अबे जिंदा रहना तो हाथ कट करना पड़ेगा ना. The poison is spreading out. There is no option. Either you save or you cut your hand. Either you die or you cut your hand. Is there an option for you? So what is the better option? पर क्या होता है कि वो लोग ऐसा अरे नहीं मैंने करते। एग्जांपल दिए. बुलेट से क्या पॉइंट? क्या बुलेट से पॉइंट तू मरता किससे फिर? ब्लीडिंग से। इधर मिला मत मिलना. बुलेट से ब्लीडिंग से कोई नहीं मरता. What is gunpowder, मैडम? बस सर अरे डूब मरो तुम नाइट में आके, तुम्हें ये नहीं पता तो. सर हम लोग किधर मूवी देखते हुए? तो मैं कौन सा मूवी देख रहा हूँ? कॉमन सेंस है. सर बुलेट प्लास्टिक के भी होते हैं, रबर बुलेट्स होते हैं, चाहे यूज बाय पुलिसमैन. तो रबर बुलेट्स आपको सिर्फ मारते हैं, लगता है खून निकलता है, उससे मरता है क्या फिर? सो इट इज ओनली टू डिस्पर्स द क्राउड. तो उसमें खून निकला, क्यों नहीं मारता फिर? एक्सेस ब्लीडिंग। सर प्रिंट आउट एक्सेस दिमाग दिए अननेसेसरी चलाने के लिए. ओके नाउ चल. सो इस केस में एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज जिंदा रखना है. इस केस में will I allow amputation? No. Is the poison spread out? Not possible. गन्स मतलब बुलेट सिर्फ छू के गया है तो उसका पॉइजन तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता है. अब इसके बाद भी अगर हाथ कट किया तो कैन आई से एक तरह सुसाइड ही हो. एक तरह सुसाइड ही हुआ ना एक तरह का. इसके लिए हुआ इसके लिए नहीं हुआ। हाँ इसके लिए नहीं हुआ ना. So now understand this part. Suicidal bags. I have a blackboard as a cell. उस सेल के पार्ट में कुछ पार्ट में there is a damage done. So I need to clean that damaged part, worn out part or dead part. So lysosomes will go and clean out that part. Yes or no? That is the normal digestive function of the lysosome. Required? हाँ या ना? Yes. Yes. But in certain cases, what happens? ये normal cell है. Nothing damaged, nothing happened to it. But lysosomes के अंदर ही होते हैं. Lysosomes are not able to identify कि बाबा खराब है या टूटा फूटा है. It is just cleaning that part. It's like मम्मी ने बोला घर साफ करना है, अपन ने रद्दी निकाला फेंक दिया. मम्मी डैडी का इंपॉर्टेंट फाइल था फेंक दिया. ओके तो इसको क्या बोलेंगे? सुसाइड ही करने की तरह बोलेंगे. तो यार एग्जैक्टली सेम ओवर है चिल्ड्रन. सुसाइडल बैग इज नथिंग बट technically used as a wrong term over there. क्या lysosomes are considered bad because they bring out extension of bone out cell organelles, bacteria, or food, they break them into small pieces. No, it is only and only when it fails to recognize that it is a not a abnormal or dead component and it start damaging the own components. तब मैं जाके उसको बोलूंगा suicidal bags. पर यहाँ पे इन जनरल सभी ग्रुप में यही बोलते हैं, मतलब लोअर बुक्स में यही बोला जाता है क्या इट डाइजेस्ट इट्स ओन कंपोनेंट. इसके लिए खुद ही अपने आप के कंपोनेंट को मारता है, इसके लिए उसको सुसाइड कहा जाता है. समझ में आया? हाँ या ना? हाँ. तो खुद चाकू लेके खुद को ही मारेंगे तो सुसाइड ही बोलेंगे ना उसको.
Now, then वहां पे आपके बुक में लाइसोसोम्स के बारे में लिखो. Lysosomes are tiny spherical cyclic structures events in the cytoplasm found in animal cells, but are rare. Lysosomes पे लिखना नहीं है फिल्म से. Okay, the plants have a tough cell wall surrounding a plant that keeps foreign substances. The chief function of the enzyme secreted by lysosome is intracellular digestion. What is intracellular? अरे आपने नहीं इनके बुक में दिया इसलिए बोल रहा हूँ. Intracellular मतलब when it digests the component within the cell, we say intra. आपस के अंदर है तो इंट्रा, दो के बीच में है तो इंटर. So if I take you are fighting among yourself, so I say inter. पर अगर तू खुद ही से लड़ रहा है because you are taking alcohol और उससे बच के तू ट्राई कर रहा है क्या नो ऐसा खुद से नहीं, so then that is known as intra. So when a cell is eating its own compound within itself, तो intracellular. अगर सेल किसी दूसरे सेल को खाता, I would say it as intercellular. क्या? Yes. Next. Lysosome against digest stored food trends like proteins, fat, cytoplasm. Lysosomes also digest the red blood cells, worn out cells, etc. Hence, lysosome control the control of the part of cell of foreign particles. Lysosome are referred as suicidal bags. अक्सर यहाँ पे ना example अच्छा दिया हुआ है आपकी बुक में right hand side में. In the metamorphosis of amphibians and tunicates. I hope amphibians सबको पता है. Okay, in amphibians the larval stage has gills etc. पर जब वो adult बनता है गिल रहता है उसके अंदर नहीं. So that gills and other unwanted things are removed out. Tail will be removed out by lysosomes working onto it. Same case goes in our case also. हमारे body में जो unwanted cells होते हैं, like very specifically during the developmental stage, the cartilages which are there, certain cartilage are getting replaced by bones. Certain cartilage are being destroyed and then replaced by bones. And again, that is what we say as lysosome effect. Then, वहां पे लिखा था जो अपन ने last lecture में दिखा था, the sperm head has acrosome, which is derived from Golgi bodies and which is also derived from lysosome. उसके अंदर digestive enzymes होते हैं, which helps it to drill into the ovum. So again, it is a digestive enzyme. पर कभी कभार lysosome मतलब not a typical example, right example, but just a simple example. क्या अपना खुद का सेल जब अपनी बैंड बजाता है तो क्या होता है? Okay, heard about arthritis? Okay, इसमें bones के घिसने के वजह से the bones get damaged. There's one more condition known as rheumatoid arthritis, जहाँ पे अपने ही WBCs उसकी बैंड बजा देते हैं. And that is why the bones have frictions. So वो अलग लेवल क्या है जो आप skeletal system में. So it is something like that. Okay. Then going to the next organelle is centrosome and centriole. सर अपने लिए centrosome और centriole नहीं है ना? नहीं तुम्हारे लिए है सॉरी बेसिकली नहीं है. So we go ahead to the next organelle जो आपके में centrosomes and centrioles. Now, what is the most important part? Centrosome is found only in animal cells, helps in cell divisions and forms spindle fibers. अब तुम्हारे बुक के सबसे पहला पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ. Centrosomes and centrioles. Just तुम्हारे इसमें बाद में दिया शायद से, कंटेंट पार्ट में नहीं है, टेबल पार्ट में है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको लिखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया हुआ है पर एग्जाम में पूछते हैं. Centrosome and centriole is outside the nucleus of the animal cell. There is a small clear area of cytoplasm without any granules. In this portion, the cytoplasm, which is called centrosome, one or more tiny microtubular cylindrical structures develop. These are called as centrioles. Centriole initiates cell division, helps in spindle formation, brings cell division in animal cells. Now, what is exactly centrosome, centrioles, etc.?
Can I have a pencil from your pouches? हाँ तेरे पास ज्यादा है, दे दे पेंसिल पेन सब कुछ. सब कुछ. हाँ okay. Now if I see in my hand, I have taken a lot of pencils, pen, pencil, whatever. Okay. अब चलन मान लो कि ये फाइबर है, elongated फाइबर. अब ये फाइबर जो है, हम थोड़ा बेटर करने के लिए, ये दो फाइबर है, ये दो फाइबर है. कंसिडर करना कि ये 10 है, ये 10 है. Okay. So these fibers are enclosed around my hand. अब this are enclosed around another layer. So ये दो लेयर हुआ है. अब इनको मैं और एक लेयर के अंदर डाल देता हूँ. So it is something like a big circle. उसके अंदर दो छोटे सर्कल और सर्कल के अंदर क्या है, फाइबर्स है. Okay. Now this fibers will go on to form spindle fibers. समझ लेना, ये फाइबर स्पिंडल फाइबर बना रहा है. ये किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर है. दैट सर्कल्स, टू सर्कल्स आर रिफर्ड एज सेंट्रियोल्स. और सेंट्रियोल किसके अंदर है, सेंट्रोसोम के अंदर. नाउ वेयर इज सेंट्रोसोम प्रेजेंट? सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट नियर द सेल. न्यूक्लियस के हमेशा नजदीकी दिखाते हैं. नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन में आपको ये क्वेश्चन आता है क्या, वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल. Centrioles are small structures present within the centrosome, which is present near the nucleus of an animal cell. अब बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे नहीं, शेयर नहीं. Sir, board. Now we have two cells, a plant cell and a animal cell. दोनों में न्यूक्लियस है. Now in the animal cell there is a organelle, a clear cytoplasmic area जहाँ पे granules वगैरह कुछ नहीं होते. That part is known as centrosome. Within the centrosome there are one or two structures enclosed known as centrioles. Within the centrioles are fibers which will go on to form the spindle fibers. अब यहाँ पे लिखा देखो, form spindle fibers. Now can you see this part? ये दिखाई दे रहा राइट हैंड साइड का डायग्राम, इधर आपके बुक में नहीं है, इधर दिया है स्क्रीन के ऊपर. नाउ द अपर पार्ट लिखा हुआ है सेंट्रियोल स्ट्रक्चर और नीचे लिखा हुआ है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स. देन वो अपन वो गेम खेलते ना बचपन में था, छोटे छोटे ट्यूब्स ज्वाइन करते करते ऐसा ब्लॉक्स, बड़ा ब्लॉक बनता है, कुछ बनाते हैं अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो वैसे ही होता है कि अपने बॉडी में देयर आर माइक्रोस्केलेटन. अपना स्केलेटल सिस्टम होता है, वैसे ही सेल के लिए होता है साइटोस्केलेटन. अब साइटोस्केलेटन किससे बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से. सो दिस फाइबर्स आर नथिंग बट मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज किए जाते हैं. दे आर नोन एज 9+1 अरेंजमेंट. यू कैन सी ये 9 स्पोक्स होते हैं और बीच में एक होता है. इट इज नोन एज 9+1 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, अलग अलग फॉर्म के होते हैं. अब ये अरेंजमेंट बन जाता है आपका एक सेंट्रियोल. अब ये एंट्रो होता है एक अलग लेयर, जिसको अपन बोल रहे हैं सेंट्रोसोम. Now when a cell is about to divide, जब सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रोसोम पहला ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड करेगा और उसका सेंट्रियोल्स अलग हो जाएंगे. इस सेंट्रियोल्स के अंदर किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइबर से बना हुआ है. They give out these fibers to form ester rays. यहाँ पे देखो डायग्राम में एस्टर लिखा हुआ है. सो एक पार्ट बनता है उससे, उसे बोलते हैं अपन एस्टर रेस. और दूसरा पार्ट बनाता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो सेल को एक्चुअली क्रोमोसोम को पुल करने के लिए काम करता है. उसको बोलते हैं अपन स्पिंडल फाइबर्स.
सब सेंट्रोसोम्स का सेल डिवीजन में भी पार्ट है। But अब तो क्वेश्चन अराइजेस इज सर एनिमल में सेंट्रोसोम है बराबर, व्हाट इज द फंक्शन? तो हेल्प इन डिवीजन Cell division. Do only animal cell divide? तो Can the plant cell divide? यस But plant cell do not have centrosome. इनमें सेंट्रोसोम नहीं होता. That's the difference between a plant cell and a animal cell. So plant cell में डिवीजन कैसे होता है? जब plant cell में सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रियोल्स तो होंगे ही नहीं फिर, पर उसके अंदर के जो फाइबर्स है they are scattered in the cytoplasm. So when the plant cell is about to divide, these fibers will go on to form spindle fibers. Ultimately divide कौन कर रहा है? फाइबर Spindle fibers. वो किससे आया? फाइबर से फाइबर से आया. वो फाइबर किसके अंदर है? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम. ओके, सिर्फ फर्क इतना है कि इट इज समथिंग लाइक कि अपन ने एनिमल में उसको एक डब्बे में बंद करके रखा, प्लांट में वो स्कैटर्ड है. प्लांट में अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे बट दे विल फॉर्म फ्रॉम द फाइबर, और फाइबर्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो इट वुड बी अल्टीमेटली देयर इन ऑल ऑफ अस. मतलब each one of them is one fiber. Which way? One microtubule is one fiber. No, the each microtubule का arrangement is one fiber. ये सब के सब माइक्रोट्यूबुल्स एक वेंट्रिकल का पार्ट है और उसके अंदर सभी ऐसे बहुत सारे होंगे टू फॉर्म द फाइबर्स. वो आपको अभी नहीं 11th स्टैंडर्ड पे समझो. ओके, बट दैट इज हाउ इट हेल्प्स. तो स्पिंडल फाइबर्स प्लांट में भी बनेंगे, एनिमल में भी बनेंगे. सिर्फ प्लांट में इट इज ओपनली फॉर्म, एनिमल्स में वो इट इज फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रियोल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम. क्लियर विद दिस पार्ट? नेक्स्ट, फिर आपके बुक में दिया हुआ है प्लास्टिड्स. आई थिंक आपके सिलेबस में प्लास्टिड ही है. Plastids. Now what are plastids? Again, they are specialized organelles present exclusively in the इसमें Plants. plant cells. Do animal cells have plastids? No. Plastids are of three types based upon the pigments they have. Okay. One, if they are having green color, we say chloroplast. If they are other than green color, we say they chromoplast. And if they are colorless, we say them as leucoplast. ये दिया है टर्म्स आपके बुक में. क्लोरोप्लास्ट दिया है, क्रोमोप्लास्ट दिया है, ल्यूकोप्लास्ट भी दिया है, तीनों ही दिए हुए. Okay. Now we go with the first one, chloroplast. What are chloroplasts? They are the plastids which have green in color because of the presence of a pigment known as chlorophyll. What is the function of chlorophyll? To provide the वो फंक्शन नहीं हुआ, कलर हुआ. food photosynthesis. वो प्रोसेस हुआ. The function of chlorophyll is to absorb sunlight, which would help in the process of photosynthesis. Chromoplasts, colorful pigment other than green color. So we have orange color, red color, pumpkin का जो color है, सबका जो colors है. So all that are nothing but pigments. Anthocyanins, carotenoids, xanthophylls, all these are pigments which are present in the chromoplast, which gives color to the fruits, flowers and vegetables other than the green color. So आपके book में chloroplast present in green algae and higher plants, each chloroplast bounded by double membrane. मैंने कहा था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, वैसे क्लोरोफिल में डबल मेम्ब्रेन होता है. The green pigment chlorophyll traps solar energy and utilizes it to manufacture the food by the process known as photosynthesis. Then comes chromoplast. The various pigments present by imparting color to flowers attract insects for pollination. Examples of chloroplast: carotenoids, insoluble in water, impart yellow and orange colors as in carrot and cherries. सबसे कॉमन होता है carotenoids. इसका एक पिगमेंट का नाम है कैरोटीन, which is nothing but the color of the carrot.
Okay. दूसरा एग्जांपल दिया है एंथोसाइनिन्स, soluble in part red and blue color, it is contained in beetroot. ये beetroot में जो डार्क रेड कलर होता है वो आपका एंथोसाइनिन का पार्ट आ जाता है. Then comes leucoplasts. इस डायग्राम में लास्ट वाला. Leucoplasts are basically colorless and they are more of storage organs. इनमें स्टोर क्या होता है? Carbohydrates and other things which are there. So based upon what it is stored, they can be alloplast, amyloplast, elioplast. अब ये डिटेल्स आपको है नहीं, so आपको सिर्फ लिखा है वहां पे. They are colorless, rod shaped or spheroid pigments. We store food in the form of carbohydrates, lipids, and protein. They are found in seed, meristematic tissues, sex cells, ground tissues of certain roots and stems. So normally ये plants में ही मिलेंगे because that is what plastoid is. Without a next organelle. Okay, which is the next organelle? Nucleus. सबसे nucleus को अपने को डिटेल में पढ़ना. Okay, reason? It is something which is there for your 10th standard. So I want you to close your textbooks and just focus onto the board. Now, nucleus is the most chief or important organ of the cell. It is a defining feature of a cell. हमने कहा था 3 defining feature है. Cell membrane, cytoplasm and nucleus. Who discovered nucleus? Robert Brown, somewhere in 1834 के आसपास, he discovered the first nucleus. Cell theory 38 में आया, उसके बाद सेल 16th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ. मतलब ऑलमोस्ट लगभग 200 साल लगे टू फाइंड आउट द न्यूक्लियस. जैसे ही न्यूक्लियस पता चला, न्यूक्लियस के बारे में पता चला, माइक्रोस्कोपी और एडवांसमेंट में, और उसके 4-5 साल के बाद शेल्डन, श्वाना, थियोडोर ने आपका सेल थियरी दे दिया. So Robert Brown discovered the first nucleus. Now, based upon the nucleus present or absent, we say the cell is uninucleate, multinucleate, and enucleate or anucleate. Now, what is uninucleate? A cell has a single nucleus. What is multinucleate? More than one. What is enucleate or anucleate? Do not have any nucleus. Okay. अब पहला एग्जांपल लेते हैं uninucleate. Majority of the cells are uninucleate. Okay. Your chick cells, epithelial, are uninucleate. Cuboidal are epithelial. What? Eggs. Okay. Egg में single cell होता है, पर egg में it's a part of embryo also. But yes, uninucleate. उसके अलावा WBCs uninucleate. उसके अलावा बैक्टीरिया नो. उसके अलावा the न्यूरॉन uninucleate. There are some other cells जिनमें single nucleus होता है. Multinucleate. Plasmodium, when it is dividing, it is a part of multiple pigeon. तो आप एक मूवमेंट के लिए multinucleate बन जाता है. उसके अलावा liver cells are multinucleate. And synectimum in yeast, तो mycelium जो होता है उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियस होते हैं. So again it is a multinucleate. So nobody is going to ask you this. ये बहुत सिंपल है, ये आप लिख पाओगे. What is more important to understand is enucleate or without nucleus. So what are cells without nucleus? They do not have a DNA. Mature human RBC and mature sieve tubes are two cells which do not have a nucleus. Can you give me one line answer? Yeah, what is the function of a nucleus? One line, one word. क्या होता? Can I say nucleus is the dash of a cell? Center hub.
centers also. What is nucleus in a cell? So nucleus is the brain of a cell. Do you have organism without brain? So can we say a cell will have no nucleus? नहीं ना? Okay? So understand this part. Exam में ये आता है. Give two examples or give an example of a uninucleate cell. So you tend to write human RBC. Wrong. Mature human RBC जो आपके बुक में दिया हुआ है. और आपके बुक में जो दिया है वो रॉन्ग भी है. अपने बुक में प्रॉपर है. इनके बुक में मैच्योर ह्यूमन आर्बिसी लिखा है और इनके बुक में सीव ट्यूब्स लिखा है. इट इज नॉट सीव ट्यूब, इट इज मैच्योर सीव ट्यूब्स. ओके, नाउ व्हाई द कीवर्ड मैच्योर? जब मैच्योर का मतलब क्या होता है? मतलब आफ्टर सर्टेन ग्रोथ तभी होगा. चल, वेयर इज आरबीसी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी? अगर आरबीसी हार्ट में बनता होगा तो स्पर्म ब्रेन में बनता होगा, है ना? और शायद हॉर्मोन्स नी में बनता होगा और शायद ब्लड फिर किधर और सब पानी पीने के बाद. Then all the blood cells are formed in the bone marrow. What is bone marrow? कितने नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे? गुड. अगर नॉनवेज खाते हो तो हड्डी खाते हो चबा के, उसके अंदर का ब्राउन जो अपन सब करते हैं. गोट के इसमें नल्ली जिसे कहा जाता है, उसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं बोन मैरो. नाउ within the bone marrow, so if I draw a bone structure, अगर ये बोन है तो इसका ये और ये इसके बीच में का जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन बोन मैरो. बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं, बट एज दे मैच्योर, जैसे उनका काम मैच्योर होने का हो जाता है, दे स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द बोन मैरो इनटू द ब्लड वेसल्स. तो बोन मैरो से निकल के ब्लड वेसल्स में जाते हैं. अब ब्लड वेसल में जाने के बाद वेयर विल दे मूव? टू द होल बॉडी. अब मुझे सिंपल क्वेश्चन है, तुम एक रिवर में हो, छोटे से बोट में. द रिवर इज फ्लोइंग एट अ ट्रिमेंडस स्पीड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन. तो आप बोट पे हो, विच इज अ मैकेनाइज्ड बोट नहीं है, नॉर्मल. ओके, तो बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? डू आई नीड टू डू एनीथिंग इन दैट केस? वो अपने आप जाएगी. जो कुछ कंट्रोल करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है. Then when the RBCs are in the bone marrow, उसका फंक्शन है, इसके लिए उसको न्यूक्लियस चाहिए. तो जब बनता है आरबीसी उसमें न्यूक्लियस होता है. But as it matures and comes into the blood, अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या था? उसने कहा ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑफ सेल. उसको क्या कंट्रोल करना है? उसको ब्लड के साथ घूमना है सिर्फ. डू आई नीड एनी कंट्रोल? नो. उसके साथ में ऑक्सीजन लेता है और छोड़ देता है. उसके लिए उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, वो डिफ्यूजन का पार्ट हुआ. सो दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस गेट्स डिसइंटीग्रेटेड एंड सो वी से मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, बिकॉज जनरली आरबीसी हैज अ न्यूक्लियस. तो मैच्योरिटी के टाइम निकल जाता है. समझ में आया? मतलब जनरली वी ऑल आर बोर्न विद अ ब्रेन, जैसे जैसे बड़े हो जाते हो बोलने की जरूरत नहीं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग. सो वैसा है. बोल. बोन में ब्लड, रेड ब्लड सेल बनते कैसे? 11th और 12th में कुछ तो बचेगा पढ़ने के लिए. नेक्स्ट अगले साल 10th में पढ़ने. नेक्स्ट इज योर सेकंड मैच्योर सीव ट्यूब्स. अब फॉरगेट अबाउट मैच्योर. पहला तो ये सीव ट्यूब्स क्या है? गुड. अगर आंसर नहीं आता ना
तुम्हारा 8 पास कैसे हुआ समझ में आ गया मुझको, के 8 नहीं किया था ना, दिख रहा है, यूट्यूब नहीं पता तो 8 स्टैंडर्ड देयर वाज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट चैप्टर हेडिंग था, और उसमें सिर्फ यही पढ़ा था फिर जाइलम एंड फ्लोएम. सो व्हाट इज फ्लोएम मेड अप ऑफ? चीटिंग नहीं किया था ना? Xylem is made up of tracheids vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Phloem is made up of companion cells and sieve tubes, phloem parenchyma and phloem fibers. So companion cells or sieve tubes is present in the phloem. अब sieve tube के अंदर भी nucleus होता है initial level, but as it becomes mature, again the nucleus gets disintegrated. अब यहाँ पे ये sieve tubes, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, इसीलिए उसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं. सीव का मतलब छलनी, तो ये छलनी की तरह है इसके लिए, और ट्यूब है इसके लिए सीव ट्यूब्स. अब एज इट मैच्योर्स इट विल नॉट टेक द फॉर्म, न्यूक्लियस नहीं रहेगा. अब इसका सिंपल लॉजिकल आंसर, ओके, मान लो तुम दोनों दोस्त हो, ये बेस्ट फ्रेंड, ओके, एंड देयर इज अ इंसिडेंट जहां पे दोस्त का सुनना है, टीचर का सुनना है, मम्मी डैडी का सुनना है, किसका सुनोगे? एक बकवास मत कर, ये प्रैक्टिकली मुझको आंसर दे, किसका सुनोगे आप? सर बड़े तो मेरे शक्ल पे बेवकूफ लिखा है नहीं ना, किसका सुनते हैं अपन? दोस्त का. तो मम्मी डैडी तो बोलते ही रहते हैं, मम्मी डैडी बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर, सुनते नहीं, के दोस्त बोलते हैं चल बाहर घूमने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, चल, दैट्स द नॉर्मल वे. मम्मी डैडी बोले बकवास नहीं, दोस्त बोला वो राइट, और बेस्ट फ्रेंड बोला वो तो 100% राइट, के वो तो भगवान ने बोला ऐसा लगता, के अब दोस्त बोलेगा क्या चल टाइम पास करते, बंक करते, घूमने जाते, सिगरेट पीते, दारू पीते, सब कुछ करते हैं, के एंड यू स्टिल फॉलो दैट. खुद का दिमाग यूज किया नहीं. डू यू अंडरस्टैंड क्या वो रॉन्ग बोल रहा है? नहीं, कि अपने लिए दोस्त राइट, बाकी सब रॉन्ग होता है, के बिकॉज अपना दिमाग घास चरने जाया, के दोस्त राइट होता है और बाकी सब रॉन्ग होता है. Now exactly same over here. The sieve tube do not have a nucleus after a certain part. तो उसका फंक्शन कौन करेगा? बिकॉज यहाँ पे वो ब्लड तो नहीं है ना कि घुमा रहा है, उसको अपने साथ लेके जा रहा है. सो देन इसके बाजू में होते हैं सेल्स which are known as companion cells. The name itself, companion मतलब क्या? दोस्त, अपने साथ, लंगोटिया, जो भी बोलना है, ओके, अकंपनिंग वगैरह. तो ये इसके साथ हमेशा अकंपनी करते हैं. तो ये क्या करता है, किसका सुनेगा? दोस्त का सुनेगा. तो खुद का दिमाग हिलने के बाद भी यूज ही नहीं करने वाला है, तो दिमाग क्यों चाहिए उसको? ओके, बिकॉज दैट फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल, इसीलिए उसको नाम भी दिया गया कंपेनियन सेल. दैट इज व्हाई मैच्योर सेल ट्यूब्स. क्लियर विद दिस? कोई डाउट है? Shall I go ahead? Now, next part is, now based upon this nucleus, uninucleate, multinucleate and enucleate. अब आते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे. Now what is the structure of a nucleus? A nucleus is a double membranous structure like mitochondria and chloroplast. In fact उल्टा है, like nucleus, mitochondria and chloroplast से डबल मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेन, पर न्यूक्लियस के अलावा इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट which is a double layered structure. Now in layers में there are small gaps for information to pass. So this gap, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. These gaps are known as nuclear
pores. It is through this nuclear pores the nucleus communicates with the cell, that is cytoplasm, or it may communicate with the endoplasmic reticulum. So it may communicate with the ER, it may communicate with the cell, or it may communicate through the ER outside the cell. ये cell का एक part हुआ, तो ये ER से होते हुए things go out. So it can communicate outside the cell to the next cell. That is what the nuclear pore does. Within this nuclear membrane, which is how many layers? 2 layers. It is exactly cell membrane made up of lipoprotein, is a semi-permeable layer. Within this nuclear membrane is the ground matrix. What is a ground matrix known as? Nucleoplasm. जैसे सेल के अंदर क्या था? सेल के अंदर ग्राउंड मैट्रिक्स क्या था? Cytoplasm. Same way, within the nucleus there is a ground matrix known as nucleoplasm. What is the function of nucleoplasm? It is slightly thicker than the cytoplasm. इसलिए restricted है इस जगह पे. And it is this site where all the activities of the nucleus takes place. So this is cytoplasm was the site for all the cellular activities. This is the site for all the nuclear activities. Within the cytoplasm, nucleoplasm, there are thread-like structures. What are these thread-like structures? Chromatin fibers. What is the function of chromatin fibers? To signal. Send message, send information. Information. और भी आगे और क्या? Drawing. Function. What is the function of chromatin fibers? What does it carry? Onsa. DNA, It doesn't carry DNA. What is its function? It carries your genetic information. Okay, it is this chromatin fibers which decides your body features. The genetic material of our body is chromatin fibers. तो तुम काले पीले नीले के तुम्हारा सफेद बाल है काला बाल है जो भी बाल है तुम्हारा स्किन कलर जो भी है तुम्हारा नाक चपटा है प्लेन है जो भी है okay, all that would be decided by the chromatin fibers. Is it clear? Now, the chromatin fibers किसके अंदर है? Nucleus. Nucleus. What does the chromatin fiber carry? Genetic information. Can I say genetic information? Can I say hereditary information? Yes. Okay. Now, are we genetically all same? No. So, are our chromatin fibers same? No. No. So, chromatin fibers in your case, my case would be different. But when I say this thread, chromatin fibers के जब मैं thread को देखता हूँ, so नजदीक से देखा हूँ, दूर से देखा तो thread दिखाई दे रहे हैं मुझको nucleus के अंदर. But when I see it under electron microscope, I am surprised to see that these threads are nothing but they appear like a beaded chain. मोतियों की माला. I hope. Okay? पर मोतियों की माला कैसे होती है? थ्रेड हुआ मोती जाते हैं. यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्फ़िगरेशन है. और ना अपन बड़े बड़े इसमें भगवान को हाथ चढ़ाते हैं जिसमें से बॉल लगाए जाते हैं और बहुत सारे बॉल के ऊपर थ्रेड घुमा के किया जाता है. तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो बहुत सारे बॉल्स है, बीड्स है, इसके ऊपर ये थ्रेड घूमते रहता है एंड फॉर्म्स अ बिग चेन ऑफ बीड्स. अब ये जो मोतियों की माला है इसको अपन बीडेड चेन बोलते हैं. इसमें से मैं बीड्स को निकाल देता हूं. सो व्हाट वुड बी लेफ्ट?
thread. A plain thread. This plain thread is what I mean by DNA. Whereas these beads are referred as histones. So what is chromatin fiber made up of? DNA and histone. Again we come back to same question. What is the function of chromatin fiber? Are we all same? No. So when I say we are all not same, so can the chromatin fiber be same? But children, when I analyze it, what I find is it is made up of DNA and histones. Histones मुझ में, इसमें, तुझ में और तुम दोनों में is exactly same. So are they carrying genetic information? No. So who is carrying the genetic information? The DNA. So what exactly is this histone molecule? उसका उस पूरे प्रोसेस में क्या काम है? Okay. So for that we again go back to the start of the chapter. Can I see a cell? Okay, X and Y अलग है. But normally can I see a cell? No. What is the size of a cell? In general, microscopic micron में होगा? Micron में होता है. So cell का size अगर micron में है, 1 micron ऐसा assume करते हैं. तो what will be the size of the nucleus within the cell? उससे ज्यादा या उससे कम? उससे कम. तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड होंगे उसकी साइज कितनी होगी? उससे कम या उससे ज्यादा? उससे कम. बट सरप्राइज, जो डीएनए थ्रेड है वो हमारे केस मतलब इन जनरल में बोल रहा हूं, इट इज ऑफ 2 मीटर्स. 2 मीटर का थ्रेड is highly folded to be packed inside a nucleus which is inside the cell which cannot be seen. फोल्ड कर रहा है. अब वो फोल्ड कैसे किया है? आई कार्ड. सबको आई कार्ड दिखाई दे रहा है? थ्रेड है मेरे हाथ में. ओके. अब उसको मुझे शॉर्ट करना है. हाउ विल आई डू इट? गुड. आई विल रोल इट. ओके. व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन? ऐसे रोल करना या टेक अ स्मॉल वुडन पार्ट और उसके सराउंडिंग में इसको घुमाओ? वुडन पार्ट. या आई कैन डू इट समथिंग लाइक दिस. ये भी छोड़ देगा. Yeah, I can do it something like this. What is my finger doing in this case? Helping it to? Helping to contract the DNA. Not contract. To coil the DNA. It wraps the DNA into smaller part. Chan, that's exactly what the histone does. It is this histone molecules which helps in coiling of the DNA. जो 2 मीटर का थ्रेड है वो इतना कॉइल हो जाता है उसके सराउंडिंग में that cannot be seen by our naked eyes. Conditions applied. But अगर मैं इस बीड्स को निकाल देता हूं के और थ्रेड को बाहर निकालता हूं तो मुझे ये मैगी नूडल्स की तरह आंखों में दिखाई दे सकता. एंड देयर इज एक्सपेरिमेंट टू डू दैट. आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो एट योर होम आल्सो. नेट पे जाके ढूंढना. मेरे स्कूल में 5th या 6th के बच्चे करते हैं एज अ साइंस प्रोजेक्ट. तो तुम तो 9th के गधे हो. यूट्यूब पे जा, सब कुछ मिलता है. दैट एक्सपेरिमेंट टू बी डन रिक्वायर्स थिंग्स व्हिच आर देयर एट योर होम. इट इज हार्डली हाफ एन आवर प्रोसीजर. आप आराम से खुद देख सकते हो. एक चीज आपको सिर्फ खरीदना पड़ेगा, वो है चिल्ड इथेनॉल. दारू नहीं, मेडिकल का इथेनॉल एंड नॉट द दारू इथेनॉल. ठीक. वो उसमें डालोगे सब थ्रेड्स बाहर आ जाते हैं. मैगी नूडल्स की तरह रोल करके कैसा देख सकते. खाना मत. So go today home and you put डालना DNA extraction science project मिल जाएगा.